करजन तालुका के नारेश्वर लीलोड़ गांव स्थित आए हुए श्री दत्तात्रेय आश्रम पर श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ का प्रारंभ करने के भागरूप आज भव्य पोथी यात्रा निकाली गई। करजन तालुका के नारेश्वर लीलोड़ गांव स्थित आए हुए श्री दत्तवाड़ी आश्रम पर 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के दौरान श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ का आयोजन किया गया है। जो ये धार्मिक कार्यक्रम के भागरूप आज पोथी यात्रा का आयोजन किया गया। करजन नगर जलाराम नगर विस्तार में रहते हुए से नेपा भाई भरवाड़ के निवास स्थान से आज श्री महंत भोलागिरी बापू की निश्रा में विशेष पोथी यात्रा निकाली गई थी। गाजे बाजे धार्मिक हवन के साथ आज पोथी यात्रा का आयोजन करते हुए नगर में एक अनोखा धार्मिक माहौल देखने को मिला था। जो ये अवसर पर मांजरपुर के विधायक योगेश पटेल, पूर्व मेयर नीलेश राठौड़ सहित कई महानुभाव उमड़ पड़े थे। पोथी यात्रा करजन नगर के राजमार्गों पर घुमाने के बाद लीलोड़ गांव स्थित आए हुए श्री महंत भोलागिरी बापू के आश्रम श्री दत्तवाड़ी आश्रम पर लाई गई थी। गजाननं भूतगणपतिसेवितं कपि जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। बोलिए गणेश भगवान की जय। गौरी गणेश का कलेश माता पार्वती पिता महेश ये देश दे के दाता बच्चेरा हमें। बोले गजानन भगवान की। तरचाली से शिव पुराण कथा का प्रयोजन निकल रहा है, बरघोड़ा निकल रहा है। सब आनंद से माँ बहन आदमी सब आनंद से सेवा का आनंद ले रहे। यहाँ से सीधा जाएगा करजन, जलाराम, जलाराम से सीधा नारेश्वर जाएगा लीलोड़ गांव में। सब जगह घूमेगा। हमारा कथाकार अजय बापू है, वो कथाकार है, कथा करेगा और सबको मेरी आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। आनंद ले, मौज करो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। करजन शिववाड़ी खाते भोलागिरी बापूનો આશ્રમ આવેલ છે। ઉર્દુબાહુ તપસ્વી જે દત્ત ભગવાને તપશ્ચર્યા કરેલી એ તપશ્ચર્યા ગુરુ મહારાજ ભોલાગીરી બાપુ સતત 40 થી 45 વર્ષથી કરે છે। ત્યાં સુંદર એક આશ્રમ છે જેનું નામ શિવવાડી આશ્રમ છે ને ભગવાનની કૃપા અને એમના આશીર્વાદથી હમણાં બીજો એક આશ્રમ દત્તવાડી આશ્રમ જે નારેશ્વર ખાતે લીલોડ નજીક રાખેલ છે। એના દત્ત જયંતિ મહોત્સવ અને મંદિર બન્યાનું બીજું વર્ષ પૂરું થઈ ત્રીજા વર્ષના પ્રારંભે ગુરુ મહારાજની કૃપા અનુકંપાથી ત્યાં શિવ મહાપુરાણનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે, જેના વક્તા છે શ્રી અજયભાઈ બાપુ ચીખલીવાળા। બહુ સુંદર કથાકાર છે। તારીખ 17 તારીખ એટલે આવતીકાલથી ત્યાં શિવપુરાણની કથાનો પ્રારંભ થશે। સમય સવારે 9 વાગે અને બપોરે 1 વાગે કથાનો વિરામ આપવામાં આવશે। આજે પોથી યાત્રા છે। આજે પોથી યાત્રા શ્રી અજયભાઈ મધુગઢ જગતાભાઈ છન્નુ શાંતિનગરથી નીકળી અને અત્યારે કરજણ જશે અને કરજણથી નારેશ્વર મુકામે અને ત્યાંથી કથા મંડપમાં એ પૂર્ણ થશે।